Yeah, hi students. Just now I just completed recording lecture 8 and now I'm starting lecture 9 just after some break. In the lecture 8 I had introduced you to the numerical properties of OLS estimators, that in lecture 9 we will be doing these properties. Now this lays the foundation of the assumptions of classical linear regression model. You should not forget this. Okay. After calculating the beta 1 hat and beta 2 hat, these are the OLS estimators. Remember, OLS estimators and estimates are two different things. OLS estimator is a variable, it keeps changing. OLS estimate is some fixed constant which we have estimated given the sample set. Okay. Now, when the sample set keeps changing, these beta OLS estimators also keeps changing. That is why OLS estimator is a variable. That's why I have written here OLS estimators, not OLS estimates. Okay. This is just a small thing, but you should understand the difference. Now, today we will be doing these five properties of these OLS estimators. Now, when we have calculated these beta 1 hat and beta 2 hat, we get a sample regression line as this. Yi hat is equal to beta 1 hat plus beta 2 hat xi. Remember, just in previous lecture we had found how to calculate beta 1 hat and beta 2 hat. Beta 2 hat का फॉर्मूला क्या था? Beta 2 hat is equal to summation xi yi upon summation xi square. Okay, and beta 1 hat कैसे we got is equals to y bar minus beta 2 hat x bar. ठीक है, यहां से हमने बीटा 1 hat और बीटा 2 hat हमने कैलकुलेट किया था. When we put these into these values हमें सैंपल रिग्रेशन लाइन मिलता है. ठीक है. नाउ सैंपल रिग्रेशन लाइन जब हम निकालते हैं तो we see that these OLS estimators have certain properties. जो हमने यहाँ से जो सैंपल रिग्रेशन लाइन हमें निकाला है उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज होते हैं. ठीक है. Why I am saying numerical properties, I could have also said statistical properties also, but there is a difference. Statistical properties अलग होती है, numerical properties अलग होता है. ओके. न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं रिगार्डलेस ऑफ हाउ xi's एंड ui's आर जनरेटेड. ओके. और स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज वो होते हैं जिसके हम कुछ assumptions मान करके चलते हैं एरर सम ऑफ स्क्वायर्स के या एरर टर्म्स के. ठीक है. जस्ट अ ब्रीफ इंट्रो, जो कि हम बाद में हम स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज भी हम देखेंगे. राइट नाउ वी विल फोकस अपॉन द न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज. ओके. गिवन दिस बैकग्राउंड वी हैव 5 important numerical properties. y bar is equals to y hat bar. पहला प्रॉपर्टी क्या है? y bar is equal to y hat bar. ओके. इसको अंडरस्टैंड करना इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे हैट लगा हुआ है, यहाँ पे भी बार है, यहाँ पे भी बार है. स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड. ओके. स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं उसमें बेसिकली क्या होता है कि यू शुड अंडरस्टैंड दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ एक्चुअल y. ओके. दिस इज इक्वल टू द मीन वैल्यू ऑफ I will change the marker. Mean value of estimated y.
that is y hat. ठीक है, आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर. ओके, आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर. ठीक है, सो मीन ऑफ एक्चुअल y इज इक्वल्स टू मीन ऑफ एस्टिमेटेड y. पहला प्रॉपर्टी तो ये है. ओके, अब क्या है कि इसको हम फाइंड कैसे, इसका प्रूफ कैसे करते हैं. सो हियर इज द प्रूफ. ओके, वी नो दैट y hat is equal to beta 1 hat plus beta 2 hat xi. हमें ये पता है y hat is equal to beta 1 hat plus beta 2 hat, तो y I hat लिख देते हैं ऐसे. ठीक है, y I hat is equal to beta 1 hat plus beta 2 hat into xi. ठीक है, नाउ बीटा 1 hat क्या है. बीटा 1 hat, what is this? ये है from this formula. We will put this formula into this. Okay, so yi hat is equal to y bar minus beta 2 hat x bar then plus beta 2 hat xi. ओके, वो बीटा 2 hat xi एज इट इज हमने यहाँ पर लिख दिया है. ठीक है, सो नाउ yi hat is equal to y bar plus बीटा 2 hat हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया. नाउ xi minus x bar. ओके, now putting summation on both sides. Summation both sides. Okay, which we get as summation yi hat is equals to, इसको हम जब समेशन करेंगे तो n टाइम्स रिपीट होगा, therefore this is n y bar plus beta 2 hat summation xi minus x bar. Okay, now I think we should remember this, that sum of deviation from mean is 0. Sum of deviation from mean is 0. That is why this entire term will become 0. Okay, so now for mean हमें क्या करना है, इसको we have to divide by n. We have to divide by n. हम ये कैसे निकालें, summation divided by number of observations, right? So this will become y hat bar is equal to, ये कट जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा y bar. So this is the first property which we have proved now. The property क्या था, mean of actual y, mean of actual y, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ. mean of actual y y bar is equal to mean of estimated y, that is y hat bar. ठीक है, so hence proved. So first property is done. Okay, first property is done. I hope you have understood this, कि हमने इसको कैसे प्रूव कर लिया है, because I will be erasing this now. Okay, quickly I will erase this, then we will go to the next property. Okay, okay. For next property, what we have done is ui hat bar is equal to 0. This is the next property, ui hat bar is equal to 0. इसका मतलब ये हुआ कि जो एरर टर्म है,
एरर टर्म क्या है, ui हैट, उसका जो मीन है दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. Okay, this is the second property. Okay, so if you remember from the normal equations, okay, what we had, summation ui hat square is equal to yi minus beta 1 hat minus beta 2 hat xi. ये हमारा फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर. ओके, प्लीज जिसे समझ में नहीं आ रहा है वो हमारा लेक्चर 8 जरूर देख लें. गो टू लेक्चर 8. नाउ व्हेन वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीटा 1, जब हम बीटा 1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिला था, समेशन यू आई हैट स्क्वायर डेल बीटा 1 हैट इज इक्वल टू -2 समेशन वाई आई माइनस बीटा 1 हैट माइनस बीटा 2 हैट एक्स आई, एंड इसको हम इक्वल टू 0 पुट करते थे. ओके, सो रिमेंबर व्हाट इज दिस, what is this? This is basically yi hat. Okay, so now what we can do is -2 summation yi minus yi hat equal to 0. Okay, and what is this? This is basically ui hat. Okay, therefore -2 summation ui hat equal to 0. Okay, so डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय n अगर जब हम करेंगे और टेकिंग मीन तो क्या हो जाएगा, ui hat का मीन विल बी इक्वल टू 0. हेंस प्रूव्ड. Okay, hence proved. So what we see is that second property क्या है कि mean of the errors term is 0, जो कि हमने इसको यहाँ से अभी प्रूव कर दिया है हमें. ओके, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, प्लीज गो टू माय प्रीवियस लेक्चर एंड ट्राई टू रिकनेक्ट देयर, एंड देन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली आंसर दोज डाउट्स. ओके, now quickly coming to this third property, summation ui hat xi is equal to 0. ठीक है, summation ui hat xi is equal to 0 हमें इसको प्रूव करना है. थर्ड प्रॉपर्टी. ओके, फाइन. इसको मैं क्विकली मैं इसे रब करूंगा एंड देन वी विल गो टू द थर्ड प्रॉपर्टी. ओके, नहीं तो मैं इसी में कंटिन्यू कर सकता हूँ इसको. लेट मी कंटिन्यू फ्रॉम दिस ओनली. इसी चीज को जब मैं बीटा 2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, इस इक्वेशन को जब मैं बीटा 2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, जब मैं इसको बीटा 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ वी विल गेट दिस एडिशनल xi यहाँ पर आ जाएगा. ओके, दिस एडिशनल xi हमें यहाँ पर आ जाएगा. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, समेशन ui है xi इक्वल टू 0. ये वाला जो है ये हमें बाद में assumptions में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा. सो कीप फोकस ऑन दिस. ओके, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू बीटा 2 डिफरेंशिएट किया. यहाँ पर वी गॉट दिस, और फिर ये बाद में xi यहाँ पर आ जाता है. प्लीज गो टू माय प्रीवियस लेक्चर नंबर 8, वहां पे क्लियरली मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है. ओके, नाउ कंटिन्यूइंग फ्रॉम हियर. सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली -2 xi समेशन, ये अगेन क्या है, yi hat yi minus yi hat इक्वल टू 0. ये अगेन क्या है, ui hat. ठीक है, तो
ये एक्सआई में अंदर लेके जा रहा हूँ, लेकिन आई विल टेक वन मोर स्टेप, नॉट एन इशू। समेशन ui hat इक्वल टू 0, और फिर मैं इसको यहाँ पे अंदर लेके जाऊंगा, तो समेशन ui hat xi इक्वल टू 0, ये 2 इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो प्रूव्ड। ठीक है, हमारा तीसरा प्रॉपर्टी भी हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया है। ठीक है, नाउ क्विकली गोइंग टू क्वेश्चन proof of this yi is equal to beta 2 hat xi, yi hat is equal to beta 2 hat xi, हमें इसे प्रूफ करना है। क्विकली आई विल रब द बोर्ड एंड देन वी विल ओके। वी नो दैट हमें प्रूफ क्या करना है, yi hat is equal to beta 2 hat xi, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, सो नाउ वी नो दैट yi is equal to beta 1 hat plus beta 2 hat xi plus ui hat, हमें ये पता है। ठीक है, okay, similarly we will see कि y bar is equal to beta 1 hat plus beta 2 hat x bar। ये कहाँ से आया, प्लीज विजिट माय प्रीवियस लेक्चर। ओके, सो सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1 माइनस 2 कर रहे हैं। ओके, सो yi minus y bar is equal to beta 1 hat plus beta 2 hat xi plus ui hat minus beta 1 hat minus beta 2 hat x bar। ओके, सो हमने ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो this will be basically yi is equal to beta 2 hat, हमें यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, beta 2 hat xi minus x bar plus ui hat। okay, now yi is equal to beta 2 xi minus x bar क्या है, स्टेप डिविजन फॉर्म, जैसे कि हम इसको हम लिखते हैं स्मॉल xi से हम लिखते हैं, तो दिस विल बी beta 2 hat xi plus ui hat। ठीक है, we also know that yi को हम लिख सकते हैं yi hat plus ui hat। ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। ओके, नाउ रिमेंबर बोथ दिस आर सेम थिंग, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इक्वेट कर दे रहा हूँ, beta 2 hat xi plus ui hat is equal to yi hat plus ui hat। ओके, ये कट जाएगा, therefore we have finally got what we wanted to prove, that is yi hat is equal to beta 2 hat xi, hence property 4 is also proved now। ओके, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, स्टेप बाय स्टेप आई हैव ट्राइड टू प्रूव ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज। ओके, नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 5, quickly I will cover this so that in next lecture I will start a fresh topic। okay, fine, I am erasing this।
हमें ये प्रूव करना है। टू प्रूव समेशन यू आई हैट वाई आई हैट यू आई हैट इज इक्वल टू 0, हमें ये प्रूव करना है। ओके, ठीक है। हमने just now we proved that yi hat is equals to beta 2 hat xi. Okay, so we can write summation from for yi hat. I will write this term beta 2 hat xi. Okay, and this ui hat is as it is. Okay, I hope this is clear. Okay, now I will take this beta 2 hat out of this summation sign, summation xi ui hat. Okay, summation xi hat ui hat. Okay, and remember that for this ui hat can be written as beta 2 hat summation xi into yi hat yi minus yi hat can yi minus yi hat. It can be written as this ui is equals to yi minus yi hat. Okay, this can again be written as beta 2 hat summation xi into yi minus beta 2 hat xi. Why? Because yi hat can be written as beta 2 hat xi. Okay, so now we can write beta 2 hat xi. Okay, so now what we have, beta 2 hat summation xi yi minus beta 2 hat square summation xi square. Okay, so far so good. We know beta 2 hat is equal to summation xi yi upon summation xi square. We know that beta 2 hat is equal to summation xi yi upon summation xi square. So can we replace this? Somewhere we can replace this. Okay, summation xi yi can be written as this beta 2 hat. This can be written as this beta 2 into beta 2 hat summation xi square minus beta 2 hat square summation xi square. So this is the same thing, beta 2 hat into beta 2 into summation xi square. So this can be cancelled out. This is equal to 0. Hence proved. Okay, any question, any doubt, you can put in the comment section. I will surely answer each and every doubt. Okay, but these are foundations of a classical linear regression model assumptions. Okay, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि एक assumption आएगा कि regressor expected variable is not correlated with the error terms, वो assumptions में आएगा। फिर ये आएगा मीन ऑफ एरर्स टर्म इज 0, वो भी assumptions में आएंगे। ओके, देन फिर आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट कोरिलेटेड विद द एरर टर्म, वो भी assumptions के डिडक्शंस में आएंगे। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई दीस न्यूमेरिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। आई होप आज की क्लास काफी लेंथी हो गई है। आई विल कट इट शॉर्ट ओवर हियर नाउ, but these are the numerical properties which I really wanted to teach all students, and every student must focus on these numerical properties अगर उनको अच्छे से अपने इकोनोमेट्रिक्स में बेस बनाना है तो। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।